we have started with our anti-cancer drug, and we have seen introduction as well as the difference between normal chemotherapy of antibacterial drugs and chemotherapy of cancer. Because your bacteria or microorganism will have a certain difference between their cell and our human cells. That's why if antibacterial drug they can be act selectively. Chemotherapy or anti-cancer drug they will not, because cancer is nothing but the uncontrolled uncontrolled growth of our cell. Cancer is nothing but our own cells. So that's why you cannot kill cancerous cell without killing the normal cell. We have seen this in the last session. We have also seen these different phases of your cell cycle: G0 phase, G1 phase, then S phase, and G2 phase, okay, and M phase. G0 phase means that is the resting phase. In that cell, they will not multiply. In the in the G1 phase, cell will prepare, cell will gather all the metabolites required for the synthesis of DNA. In the G1 phase, known as a preparative phase. In the S phase, S for synthesis. So actual synthesis, actual DNA synthesis that occurs in the synthetic phase, and there is a preparation of chromosomes. Now G2 phase, if there is any changes or if there is any errors in the DNA synthesis, that will be corrected, and that will be corrected in the G2 phase. Okay, if it is not correctable, then cell will be sent to process. Okay, after that there is a M phase. M phase means mitosis. So there is an actual division, that chromosomes will be separated into two chromosomes will be separated into two nucleus. Okay, two nucleus, that is a mitotic phase. Okay, we have seen this general introduction about the anti-cancer therapy. We have seen what is meant by cancer. That is undifferentiated uncontrolled growth of our own cell. Own body cell will differentiate or will divide in an uncontrolled manner. Normally what happens, your body has a control over the cell differentiation or cell division. So your body, there are different factors like positive factors and negative factors that control the cell division. Normally what happens, your body controls the process of cell division. Now in case of cancer, what happens, there is an uncontrolled growth of your, there is a little bit difference in the cancerous, because there is a difference between cancerous cell and your normal bacteria or pathogenic organism will have definite different cell and its constituent, its enzyme. So that's why antibacterial drug can affect bacteria or microorganism selectively, but cancer cell are nothing but your own cell. So anti-cancer drug will not able to discriminate between cancerous cell and your healthy cells. So it can kill healthy cells as well as cancerous cells. So most of the anti-cancer drug, all anti-cancer drug will have adverse effect. They will depress or they will suppress the multiplication of cell where there is a active multiplication or active differentiation. For example, like your hair follicles, then like your skin, then GIT membrane, जहाँ पे भी rapid multiplication होता है, जहाँ पे जैसे for example testis in case of males, so there is a continuous continuous spermatogenesis. So all anti-cancer drug they can depress the spermatogenesis. They will have suppressant effect on the bone marrow, because वहाँ पे भी rapid multiplication चलता है सेल का, WBC का, hair follicles. Okay, that we have seen this part. Okay, growth cycle. Okay, we have seen this part. We have seen the classification again. We have seen the classification also, phase specific, not phase specific, etc, etc. We have seen this classification twice. Okay, so I'm not going to take it again. Today we'll start from here. So in the last lecture we were seeing about the classification, and from today, category of drug that is known as a alkylating agent. First category of drug that is known as a alkylating agent. So all alkylating agent, whatever drugs, those are included in this category, alkylating agents. So all they have same mechanism of action. So only comparative study will be there. जैसे कंपैरिजन में ही देखें कि किसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, कौन क्या करता है, कौन किस में यूज होता है, दैट्स इट. मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा. First we'll see the mechanism and then we'll see individual drugs. So first, alkylating agent. As the name indicate, alkylating means what? They causes alkalization. Okay, alkylating means वो क्या करते, alkalization करते, किसका, different groups present in the DNA and RNA.
तो डीएनए में क्या क्या होते हैं, जैसे दैट डीएनए इज नथिंग बट द मेड अप ऑफ राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स में ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाइडल ग्रुप्स. So all these alkylating agents, they causes the alkylation of these groups present in the DNA and RNA. So first alkylating agent, that was a sulfur mustard. Okay, sulfur mustard was introduced in the therapeutics in 1917. Not therapeutics, it was introduced in the 1917 in the chemical warfare. Sulfur mustard was introduced as a weapon, chemical weapon, which was used to treat the severe, which was used to cause the severe vesication of the skin. ठीक है, आपके स्किन के ऊपर क्या करेगा, पूरा वेसिकेशन करेगा, मतलब स्किन के ऊपर आपका पूरा एलर्जी करेगा वो. दे विल फॉर्म अ बबल ऑन योर स्किन, दैट बबल विल बी विद फ्लूइड्स, inflammation. So this first alkylating agent, that is known as sulfur mustard, was introduced into 1917 as a weapon, that is a chemical weapon in the chemical warfare. तो आपको मालूम होगा कि जो हिटलर होता है, तो हिटलर ने बहुत सारे जो लोगों का मास एग्जीक्यूशन किया था, मतलब उनको मार दिया था using chemical weapons. It is also one of the chemical weapon, sulfur mustard. It was introduced into 1917 in a chemical warfare, and which was used to cause, ये क्या करता था कि जो आपके स्किन है, सिवियर वेसिकेशन ऑफ स्किन, आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन करता था. ओके, सो स्किन विल your skin will develop these bubbles on skin on with the fluid, inflammation and inflammatory reactions. Also causes the membrane irritation, GIT ulceration, and myelosuppression. Myelosuppression means what? Myelosuppression means suppression of your bone marrow. Suppression of your bone marrow means suppression of formation of blood cells. जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो सबका सप्रेशन कर देगा, मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगा. सो अल्कलाइटिंग एजेंट, फर्स्ट अल्कलाइटिंग एजेंट वाज सल्फर मस्टर्ड इन 1917, was used in the chemical warfare, and this sulfur mustard was used to cause, or the consequences of this was severe vesications on the skin, that is a bubble on the skin with the inflammatory fluids. Okay, inflammation, then reaction, hypersensitivity, etc. They used to cause membrane irritation, GIT ulceration, and myelosuppression. The sulfur mustard. Now it is not used in therapeutics. ये कोई drug नहीं है, बस एक introduction है उसका history. Now mechanism of action. All alkylating agents, they are a neutral. Okay, they are a neutral. Okay, as such at alkaline pH. जब भी acid alkaline pH में रखेंगे, at alkaline pH they will form highly reactive quaternary ammonium derivative. So these alkylating agents, they are neutral, but when you place in a basic environment, they will form a highly reactive quaternary ammonium derivative, like this ethylenium cations, which reacts with the various groups of various groups of DNA, amino groups, sulfाइडल groups और phosphate groups. Groups होते हैं जैसे अमाइनो, okay, जितने भी groups होते हैं जैसे है ना, अमाइनो ग्रुप, सल्फाइडल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, then phosphate group present in the nucleotides of the DNA. DNA में क्या है? DNA, what is DNA? DNA is a polymer of nucleotides. Okay, deoxyribonucleotides. So it will have adenine, guanine, thymine, cytosine, phosphate, etc., etc. Okay, all these nucleotides will have certain groups. कुछ में अमाइनो ग्रुप होगा, कुछ में सल्फाइडल ग्रुप होगा, कुछ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फॉस्फेट होगा. So all these alkylating agent, they are a neutral, at neutral pH they will not do anything, but at alkaline pH they will form a highly reactive quaternary ammonium derivative, quaternary ammonium radicals, like ethylenium cations. These cations react with these amino, sulfाइडल, hydroxyl or phosphate group. Particularly they causes the alkylation. यहाँ पे क्या करेंगे, वो alkylation करेंगे, मतलब मिथाइलेशन करेंगे, इथाइलेशन करेंगे, alkylation. Okay, alkylation at amino, sulfाइडल or hydroxyl or phosphate group present in the nucleotides. Okay, in a physio, okay, which are physiologically important. Okay, nucleotides are nothing but they are the physiologically important molecule in the cell and render them unavailable for normal metabolic reactions. मतलब ये अल्कलाइटिंग एजेंट क्या करेंगे, पहले तो जो डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें जो अमीनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सल्फर ग्रुप है, सल्फाइडल ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, उसके ऊपर अल्कलाइजेशन करेंगे, so that nucleotide will not be useful. Okay, so that damages the DNA of molecule. So अगर उसमें DNA में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ही अगर अल्कलाइजेशन करेंगे, so that DNA will be damaged. Okay, first. Second thing,
So first thing, they will cause alkylation of nucleotides in the nucleic acid, DNA and RNA. Second thing, also they causes the alkylation of other physiological important molecules like enzymes and all that. These alkylating agents, first they cause alkylation of nucleotides by binding to the amino sulfhydryl hydroxyl or phosphate group and renders they causes damage to the DNA. Second thing, they also causes the alkylation of other important biomolecules of your cell, okay, like enzymes and proteins and all that. They are not available for normal reaction, okay, because alkylation in the physiological, in also the physiological molecules in the cell and render them unavailable for normal metabolic process. अभी ये इनका alkylation होगा, so that will be not available for normal metabolic process. So they may be either di or polyfunctional depending upon the number of functional group. तो ये जो alkylating agents है, alkylating agents है, they may be either die or polyfunctional. Difunctional, polyfunctional means फर्क. तो अगर अल्कलाइटिंग एजेंट सिर्फ एक ही ग्रुप को बाइंड करके अल्कलाइजेशन करते हैं उसको बोलेंगे मोनोफंक्शनल. अगर वो दो डिफरेंट ग्रुप को करता है तो उसको बोलते हैं डायफंक्शनल. अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को अल्कलाइज करता है तो उसको बोलेंगे पॉलीफंक्शनल. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, ओके, दे मे बी आइदर डाई और पॉलीफंक्शनल. Okay, for example, meclorethamine. Meclorethamine is alkylating agent rapidly undergo such molecular transformation to a active form in the aqueous solution. तो ये एक meclorethamine is also one of the alkylating agent. It rapidly undergo intramolecular transformation to a active form in a aqueous solution. तो ये बेसिकली इनका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है. और एक बार मैं आपको बोलता हूँ, सिंपल है कि what will they do? Alkylating agents, they will cause alkylation of nucleotides present in the DNA, okay, and they will damage them. So they will particularly bind with these kind of groups like, okay, these kind of group like amino, sulfhydryl, hydroxyl and phosphate group of the nucleotides, as well as some other physiologically important molecules like enzymes, proteins, and they causes the alkylation of proteins and nucleotides which are not available now for normal metabolic reaction. तो अगर वो सब नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी, but because of the alkylation they are not available for normal metabolic reaction. First they will damage to DNA and also they cause alkylation of normal physiologically important molecules and render them unavailable for the metabolic reaction. That's how they will kill the cell. They may be either di or poly or difunctional alkylating agent. So if they binds to only one specific group and causes alkylation, known as a monofunctional. These drug causes alkylation of two groups, then that is a difunctional. If they causes more than two groups alkylation, polyfunctional. So for example, meclorethamine is one of the alkylating agent. It will rapidly undergo such intramolecular transformation to a active form in an aqueous solution. That is the mechanism. Is that clear? मैकेनिज्म समझ में आया क्या मैकेनिज्म? शॉर्टकट में बोलूं अभी, अल्कलाइटिंग एजेंट क्या करते हैं? अल्कलाइटिंग मींस दे कॉजेस अल्कलाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल. तो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं सेल के अंदर? डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं और अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं. सो व्हाट दे डू, दे कॉजेस द अल्कलाइजेशन. वो मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, इथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर. So they particularly used to bind, वो bind करते हैं इसको amino group, sulfhydryl group, hydroxyl group और phosphate group in the biomolecules, particularly DNA में जो nucleotides होते हैं उसमें ये groups रहेंगे, amino group, sulfhydryl, hydroxyl, phosphate. तो उसको bind करके वहाँ पे क्या करेंगे? Alkylation करेंगे. Now that will damage to DNA. Again, alkylation of various important biomolecules of the cell like proteins and enzymes. So what will happen? They are not available for normal metabolic process. So normal metabolic process will be stopped. अगर metabolic process stop हो गए तो cell will die. So that's how they will act. Now alkylating agents, they are a nucleophile. They react with the nucleic acid. They react with the nucleic acid and inhibit the DNA synthesis. They are a nucleophilic agent and they react with the nucleic acid and inhibit the DNA synthesis. Also causes the cross linking of DNA strand in the resting as well as dividing cells. मतलब सेल अगर रेस्ट में है फिर भी वो क्या करेंगे? प्रिवेंट द क्रॉस लिंकेज ऑफ डीएनए.
They also cause the cross linking of DNA. So if there is a cross linking of DNA, that means native helical structure of DNA will be disturbed, that will be damaged, and they will prevent the cell replication. They will interfere with the cell replication. ये सेल का रेप्लिकेशन नहीं होने, ये सेल का डिविडेशन नहीं होने. ये एंटी कैंसर में क्या हो रहा है, आपको लास्ट सेशन में देखा है आपने. कैंसर मतलब क्या है? रैपिड अनकंट्रोल्ड एंड असिंक्रोनियस सेल डिवीजन विद द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल. ठीक है, आप ही के सेल है. जैसे मान लीजिए कि आपको कोई किसी को अगर कोलन कैंसर हो गया, तो नॉर्मली कोलन का जो सेल होता है उसका काम क्या है कि वहां पे म्यूकस वगैरह सिक्रेट करना एंड प्रोपाइल करना. जैसे स्टमक का सेल है, उसका काम क्या है कि उसमें जीआईटी में स्टमक में एसिड रिलीज करना पड़ेगा सेल का, या फिर दूसरे कोई सेल से उसका जो काम है वो नॉर्मली उसका एक लाइफ स्पैन होता है सेल का. तो वो सेल का लाइफ स्पैन होता है एंड उसके बाद वो मर जाता है. So that is decided by our body. Okay, so cell cycle is decided by our body. But if due to some reason, for example, if there is damage to DNA, there are a lot of factors. If imbalance between positive and negative factor that control the cell growth, then there will be cancer. Uncontrolled growth of cells with the loss of function, that is cancer. So आपको क्या करना है कि कैंसर में कि जो सेल ग्रोथ हो रहा है उसको इनिबिट करना है. So first drug is alkylating. They bind to different groups of biomolecules and causes alkylation. Biomolecules will not be available for normal metabolic reaction of the cell and cell will die. Okay? So they are nothing but the nucleophilic reactant. They react with the nucleic acid, okay, inhibit the DNA synthesis and also causes the cross-linking of DNA in the resting as well as dividing phase of cells, and thus they will interfere with the replication. DNA का replication नहीं होने देंगे क्योंकि DNA को जो न्यूक्लियोटाइड है उसको बाइंड करेंगे. उसके बाद में अमीनो एसिड को ये जो एंजाइम्स होता है सेल का उसके प्रोटीन जो होते हैं उसको भी बाइंड करते हैं. दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट. नाउ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होगा. फर्स्ट साइटोटॉक्सिसिटी. साइटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या है? साइटो मतलब सेल, सेल टॉक्सिसिटी मतलब सेल को टॉक्सिसिटी. तो साइटोटॉक्सिक एक्शन, they damages the growing nuclei and multiplying cell. They will damage the growing nuclei and multiplying cell. जो माइटोसिस में होता है, माइटोसिस जो होता है कि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होगा. ठीक है, one chromosome will be divided into two daughter chromosome. So they will damage the nuclei and multiplying cell in a hematopoietic system as well as, okay, hematopoietic system. Rapidly dividing cancer cell उसको भी करेगा along with that, okay, along with that hematopoietic system and actively multiplying cell. These are the affected. Most of therefore causes the side effect like leukopenia, thrombocytopenia, and toxidosis. They can cause aplasia of bone marrow. तो साइटोटॉक्सिक एक्शन मतलब क्या है? ये सेल को टॉक्सिटी करेगा, सेल को किल करेगा. कैसे करेगा? बाय द एक्शन ऑफ अल्कलाइजेशन. ओके, सो ये अलग, ठीक है, इट इज डिजायर्ड फॉर कैंसर सेल. तो आपको क्या है कि कैंसर सेल को मारना है. एज आई टोल्ड यू दिस एंटी कैंसर ड्रग दे लैक द स्पेसिफिसिटी. उनको कैसे मालूम कि ये कैंसर सेल है ये नॉर्मल सेल है? बिकॉज दोनों भी सेल किसका है? आप ही के बॉडी का है. सो दे विल नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन normal cell normal cell and cancerous cell. So they will also kill the normal cell, particularly rapidly multiplying cells. They cause damage to the growing nuclei and multiplying cell in a hematopoietic system. Hematopoietic system मतलब क्या? जो भी आपका बोन मैरो है वहाँ पे hematopoietic system होता है. वहाँ पे WBC बनता है, RBC बनता है. Bone marrow will produce WBC and RBC, okay, known as a hematopoietic system. So they also causes the damage to a hematopoietic system. Mostly rapidly dividing cell and actively multiplying cells, they are affected by this alkylating agent, and that's why they can have adverse effect like leukopenia, thrombocytopenia, abnormal decrease in the thrombocytes in the blood, leukocytes in the blood, leukopenia, thrombocytopenia. In the toxic dose, they can cause aplasia. Aplasia of bone marrow मतलब they can cause, okay, they will bone marrow will lose its activity. Bone marrow will lose its function, that is to produce the blood cells. So that is aplasia of bone marrow. Now epithelial tissue such as cornea, intestinal mucosa are also affected, result in the ulceration as a adverse effect. तो ये साइटोटॉक्सिक है. तो पहले तो जो रैपिडली ग्रोइंग सेल है उनको उनको उनके ऊपर एक्ट होगा, ये उनको किल कर देगा. ठीक है, so along with that cancer cell
आपके बॉडी में और भी सेल है कि जहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है सेल का, रैपिड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, वहाँ पे कंटिन्यूस सेल का मैन्युफैक्चरिंग चलता रहता है, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। कुछ डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम होता है 1 to 3 days, तो ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। So that is also rapidly multiplying cell part. Okay, again here follicle. Then again your GIT epithelial cells. They are also rapidly growing and multiplying cells. So along with the cancer cells, they also cause toxicity to these cells. That is the hematopoietic cells that result in the leukopenia, thrombocytopenia. In toxic doses, they can cause aplasia of bone marrow. Aplasia means bone marrow का function ही कम हो जाए, बंद हो जाए। epithelial tissue से कॉर्निया, कॉर्निया मतलब आपका जो eyes है उसका कॉर्निया। तो intestinal mucosa also affected. That means they cause ulceration of intestinal mucosa. That is the one adverse effect. Alopecia results. That is alopecia means loss of hair. Alopecia is the result of hair follicle damage. So they जहाँ पे भी rapidly multiplying cell होता है, जैसे hair follicle हो गया, आपका टेस्टिकल्स हो गया, टेस्टिस में भी वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस चलते रहता है. So they can damage their testis also. So they can render a young adult और young male उसका मतलब उसका स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट कर देंगे, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है उनका. सो ओके, spermatogenesis will be inhibited, hair follicle will be damaged, that result in the alopecia. GIT ulceration will be there, okay, intestinal mucosa ulceration, corneal ulceration will be there. As they suppresses the bone marrow, leukopenia, thrombocytopenia will be the adverse effect. मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग जो है वो बोन मैरो को ही अफेक्ट करेंगे, क्योंकि बोन मैरो क्या है, रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स वहां पे होता है, रैपिड एक्टिव सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग इन द बोन मैरो, दैट्स व्हाई. एंड एंटी कैंसर ड्रग्स व्हाट इज देयर फंक्शन, दे विल किल द सेल्स वेयर देयर इज एक्टिव मल्टीप्लिकेशन. कहाँ कहाँ पे होता है एक्टिव मल्टीप्लिकेशन, जो आपका नॉर्मल बॉडी का जो है चालू है, हिमेटोपोइटिक सिस्टम, कॉर्निया, इपिथेलियम, आपका टेस्टिस, ओके, हेयर फॉलिकल, ये तो चालू रहता है कॉर्निया. बट कैंसर क्या होता है, कैंसर मतलब क्या, देयर इज अ एक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, cells are rapidly dividing, uncontrolled unsynchronous growth of cells with the loss of functional capacity of cell, that is nothing but the cancer. तो आप ही के सेल है जो अनकंट्रोल ग्रो हो रहे हैं, आपका बॉडी कंट्रोल करता है कि आपके सेल्स कितने ग्रो होने चाहिए और कब उसने मरना चाहिए, उसका कंट्रोल आपके बॉडी के अंदर में जो एक्टिव एंड पैसिव फोर्सेस होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट when there is damage to this active, there is a imbalance between active and passive regulating factors, or if there is damage to DNA, there will be uncontrolled cell proliferation, that is known as cancer. एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल का, मतलब कैंसर सेल का, तो वहां पे एक्ट होंगे. बट जैसे मैंने बोला कि एंटी कैंसर ड्रग दे विल नॉट हैव स्पेसिफिसिटी, तो उनको क्या मालूम ये कैंसर सेल है ये नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल है उसके ऊपर वो भले ही कैंसरस हो या ना हो, सबको किल करेंगे. ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, यू कैन नॉट किल द कैंसर सेल विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल, बिकॉज एंटी कैंसर ड्रग दे लैक इन द स्पेसिफिसिटी. जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है कि बैक्टीरिया का सेल डिफरेंट है, बैक्टीरिया का सेल वॉल डिफरेंट है, बैक्टीरिया का डीएनए के रेप्लिकेशन स्टेप्स डिफरेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद में उसका उसका जो एंजाइम्स होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस. सो दैट्स व्हाई एंटीबैक्टीरियल ड्रग दे कैन सिलेक्टिवली किल, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही अफेक्ट करेगी, आपके सेल को अफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग. बट एंटी कैंसर ड्रग क्या है कि उनको कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर सेल है ये कैंसर सेल नहीं. so they will kill all cells where there is a rapid multiplication, जहाँ पे बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वहां पे वो सबको किल करेंगे. मतलब कैंसर सेल को भी करेंगे और नॉर्मल सेल जहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे हिमेपोएटिक सिस्टम, बोन मैरो में क्या होता है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है सेल का, आपके डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी, ये तो वहां पे भी अफेक्ट करेगा, वहां पे सप्रेस करेगा, वहां पे किल करेगा. सो एडवर्स इफेक्ट मिलेगा आपको, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अगर बाद में एपिथेलियल सेल्स जो होता है, एपिथेलियल सेल्स जहाँ पे जीआईटी लाइनिंग जो है वहां पे भी रैपिड मल्टीप्लिकेशन चलता है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो वो नीचे जाता है बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालसिस, वो सेल क्या होते हैं उसके साथ में निकल जाते हैं. सो दे आर वेरी लूज लेयर ऑफ सेल्स, सो वहां पे continuous replacement होता है. So there is actively dividing cells. Again in the hair follicle also there is actively dividing.
in the sperm in the leading cells of your testis. That is also continuous spermatogenesis is there. The sperm is the smallest cell in the human body, okay, and ovum in the female, that is the largest cell in the human body. Sperm क्या है, smallest cell होता है आपका human body का, और ovum क्या होता है, ओवा, that is in present in the female. Female में ovum होता है, that is the largest cell, okay, egg. So spermatogenesis is also inhibited by these drugs irreversibly in the males and can cause amenorrhea, amenorrhea and petotoxicity in the female. तो जो बच्चा रहेगा पेट में उसको भी टॉक्सिटी कर सकता है. अमनोरिया मतलब, ओके, अमनोरिया मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग, ओके, ओके, इरेगुलर ब्लीडिंग. अमनोरिया मतलब absence of vaginal bleeding. Dysmenorrhea means irregular bleeding, okay. Next one is immunosuppression. So obviously immunosuppression means what? Immunosuppression, first action of alkylating agent is a cytotoxicity, that means ये सेल को किल करिए. सेकंड immunosuppression, okay, they act as a immunosuppressant by suppressing the production of antibody. They also act as a immunosuppressant by suppressing the production of antibody. Miscellaneous action is nothing but the alkylating agent can cause nausea, vomiting. In high dose they can cause CNS stimulation, vomiting and death. They also known as a radiomimetic drug. Alkylating agents, they are also known as a radiomimetic drug because of their actions are like ionizing radiations. We'll see the individual drug alkylating agent, individual alkylating agent, okay. First is a meclorethamine. Meclorethamine is a water, okay. This meclorethamine, when you dissolve in a water rapidly undergoes chemical transformation within a minute and hence it is given by intravenous route. तो अगर इसको वाटर में जैसे ही आप सॉल्वेंट में रखेंगे, so it will undergo transformation, okay, within a minute. That's why it is given by intravenous route. Highly toxic drug, ठीक है. यहाँ पे एकदम सिंपल मैकेनिज्म तो सबका सेम में रहेगा. अल्कलाइजेशन ऑफ important groups of your nucleotides and vitamins, nucleotides and that enzymes of the cell, okay. ये तो मैकेनिज्म सबका सेम रहेगा. इसमें सिर्फ ADME क्या है, एडवर्स रिएक्शन एंड थेरेप्यूटिक यूजेस, ठीक है. सो आउट ऑफ दैट मेक्लोरेथामाइन, व्हेन इट विल बी dissolved in the water, it will undergo rapid transformation within a minute and is given by intravenous route. It is highly toxic and can cause, ये क्या है, टॉक्सिक होता है, it can cause anorexia. Anorexia means आपको भूख न लगा, severe nausea, vomiting and therefore it is given in the bedtime, night में. Severe bone marrow depression, aplasia of bone marrow and death because they are a cytotoxic. सेल को मारने वाले से ड्रग से, तो सेल को मारेंगे, अपने सेल को ही मारेंगे. कैंसर सेल किसका है, अपना ही है, और दूसरे इसके साथ में ते होता ना गव्हासोबत दगड पण भरले जातात. नाउ नेक्स्ट वन इज थेरापेटिक यूजेस ऑफ दिस मेक्लोरेथामाइन. Hodgkin's disease, lymphoma. Lymphoma means cancer of lymphatic gland. Other malignancies because of the Hodgkin's disease में यूज करते हैं, then lymphomas में यूज करते हैं, and other malignancies मतलब other cancer. Because of their toxicity, they are replaced by other drugs like lomustine. Lomustine. It is given by oral route. PO means per oral. PO means per oral. Then carmustine, istamustine. ठीक है. तो मेक्लोरेथामाइन replaced by this lomustine, carmustine, istamustine. Istamustine क्या है? Istamustine is nothing but the estrogen plus mustine. Okay. It is a alkylating agent plus estrogen derivative. एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन, उसको एक कॉम्बिनेशन करके मस्टिन जो है, मस्टिन मतलब मस्टर्ड, इट इज नाइट्रोजन मस्टर्ड प्लस आपका एस्ट्रोजन, तो ये दोनों मिला के बनता है आपका इस्टामस्टिन. इट इज डिजाइन टू डिलीवर द मस्टिन टू ए स्पेसिफिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, दैट इज साइट इन द प्रोस्टेट कैंसर. इस्टामस्टिन प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं. इस मेक्लोरेथामाइन वाज रिप्लेस्ड बाय carmustine, istamustine and lomustine. All are the nitrogen mustard. Now next one is cyclophosphamide. Mechanism तो similar रहेगा, same. Alkylation of your nucleotides bases at a amino, then sulfhydryl, then hydroxyl group or phosphate groups. Okay, then also causes the alkylation of important biomolecules in the cell. That is enzymes, proteins and other important biomolecules. Cyclophosphamide is given by parenteral route. ये आजकल भी यूज करते हैं. Cyclophosphamide is also nowadays used, given by parenteral route
oral route, and it is a prodrug. ये prodrug है. So it will be converted into active metabolite in the body. It will be converted to active metabolite in the body. So what is the active metabolite? Converted into hydroxyphosphonamide. 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 So that is cyclophosphamide will be converted to hydroxyphosphonamide. So hydroxyphosphonamide is an active metabolite of cyclophosphamide. Cyclophosphamide is a prodrug. Okay. Hydroxyphosphonamide, then aldophosphamide. Okay, aldophosphamide and then arecoline. ये मेटाबोलाइट्स है. Hydroxyphosphonamide, aldophosphamide. These are the these are the two active metabolites of cyclophosphamide. उसके बाद में और एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है. टॉक्सिक मेटाबोलाइट वो अपन देखेंगे. नाउ इट कैन एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके. देखो पहले कॉलम में जो है एडीएमई एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. दूसरे कॉलम में एडवर्स इफेक्ट एंड तीसरे कॉलम में यूजेस. बस मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा. नाउ एडवर्स इफेक्ट क्या है इसकी. इट कैन कॉज लिवर डैमेज. ओके. देन केमिकल सिस्टाइसिस. chemical cystitis, then toxicity to the urinary system, urinary epithelium. urinary system का जो epithelial layer है उसको ulceration करेगा because of the one toxic metabolite known as arecoline. So question आ चुका है. arecoline is a toxic metabolite of cyclophosphamide that causes the ulceration of urinary epithelium. Okay. Now in that case there is one antidote known as a mesna. MESNA. A sulfur hydrogen compound react with the toxic metabolite and prevent the toxicity and hemorrhagic cystitis caused by cyclophosphamide. तो cyclophosphamide का जो मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है. हाइड्रोक्सी फॉस्फामाइड देन अल्डोफॉस्फामाइड. दीज आर द टू एक्टिव मेटाबोलाइट. ठीक है. बट दे आर नॉट टॉक्सिक. देयर इज वन अनदर मेटाबोलाइट नोन एज एरेकोलिन or acrolein, not arecoline. Acrolein is another toxic metabolite which causes the hemorrhagic cystitis. Hemorrhagic मतलब blood निकलेगा. cystitis मतलब वहाँ पे cyst बनेगा. cyst मतलब fibrous, there is development of fibrous over the cell. So epithelial layer जो होता है urinary system का उसका उसमें वो damage करेगा, ulceration करेगा. So for to prevent that mesna is used. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. mesna is used in the toxicity of cyclophosphamide. Okay. mesna क्या है इसका डिटेल में अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे बुक में. It is used in the treatment of multi drug resistance for various malignancies. various टाइप के कैंसर के लिए यूज करते हो. various malignancies. chronic lymphatic leukemia. Okay. chronic lymphocytic leukemia मतलब lymph gland का कैंसर lymphoma, solid tumors. And it is also immunosuppressant drug. जब आपको ट्रांसप्लांट करते हैं कोई ऑर्गन उसमें क्या होता है कि दैट ऑर्गन इज नॉट फ्रॉम योर बॉडी. ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब जैसे लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपका लिवर खराब हो चुका है दारू पी के तो आपको दूसरा लिवर डालना पड़ेगा. तो दूसरा जो लिवर है वो दूसरे बंदे का ही होगा ना किसी का ह्यूमंस का. तो वो लिवर आपकी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करेगा. योर बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट दैट फॉरेन ऑर्गन because foreign organ is nothing but the foreign protein. So अगर foreign protein आपके बॉडी में डाल दिया तो आपको एनाफिलैक्सिस होता है और आप मर जाते हो. ठीक है. So because of the immunogenic response, okay, foreign protein is treated as an antigen inside our body. So that liver will be treated as an antigen inside your body. So at that time to cause successful implantation, okay, so what you have to do, you have to suppress your immunity. So by using immunosuppressant drug. Okay. So at that time this cyclophosphamide is also used. Patient on therapy of cyclophosphamide, they are advised to take plenty of liquids because it causes hemorrhagic cystitis. Hemorrhagic cystitis can be prevented by this mesna. So mesna drug है that is it will prevent the toxicity of your cyclophosphamide. ये mesna याद रखो. ये mesna क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. Then next is nothing but the melphalan. Okay. So mechanism is same. It is well absorbed when given orally, metabolized in the liver and excreted in the urine. Now it can cause less alopecia than meclorethamine. तो ये less alopecia करेगा than meclorethamine. Okay. Other adverse effects are the like same like that of meclorethamine.
बाकी के एडवर्स इफेक्ट सेम ही मैक्लोरेथामाइन के जैसे. इट इज प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल मायोलोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर. मेल प्लान क्या है इसमें यूज करते हैं. देखो एंटी कैंसर ड्रग में क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका कि एक तो बेसिक क्वेश्चन आएगा आपको जो पहले स्लाइड से इनिशियल, दूसरा मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर टॉक्सिटी हो गया किसी का जैसे मेस ना आए उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है. और स्पेसिफिक यूज ड्रग ऑफ चॉइस अगर है किसी में तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है. और नेक्स्ट वन इज क्लोराम्ब्यूसिल. क्लोराम्ब्यूसिल, ठीक है. क्लोराम्ब्यूसिल इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड इफेक्टिव ओरली. ये ओरली इफेक्टिव है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड है. इट इज अ माइलोसप्रेसिव which is a dose dependent and can be reversed. It less likely to cause alopecia. तो मेक्लोरेथामाइन क्या है, एलोपेसिया करता है. मेलफालान लेस लाइकली टू कॉज एलोपेसिया. क्लोराम्बिसिल इज आल्सो लेस लाइकली टू कॉज एलोपेसिया. एलोपेसिया मतलब टकला होना. ठीक है, आपके सब बाल झड़ जाएंगे. दिस इज एलोपेसिया. उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिनॉक्सिडिल. ड्रग ऑफ दिस क्लोराम्बिसिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द क्रोनिक lymphocytic leukemia. Leukemia मतलब blood cancer of choice in case of chronic lymphocytic leukemia. Active prominent against malignant cell of lymphoids. Other uses are like cyclophosphamide. Now next one is thiotepa. Similar to chlorothamine. उसका ADME क्या है? Adverse will be same है. It is used in the superficial bladder tumor. Sulfan. It is effective orally, rapidly cleared from the blood within 2 or 3 minutes, excreted in the urine. The methasulfonic acid. ये याद रखो. ब्यूसल्फोन उसका मेटाबोलाइट क्या है? It is excreted in the form of methane sulfonic acid. Busulfan is excreted in the form of methane sulfonic acid. Okay. Then adverse effect क्या है उसके? Adverse effect thrombocytopenia. ठीक है, thrombocytopenia. Abnormal increase in the thrombocytes. Amenorrhea. Skin pigmentation resembling to Addison's disease. Then gynecomastia, pulmonary fibrosis. Gynecomastia means if you see the female symptoms in the male, the gynecomastia जैसे होता है नॉर्मल ह्यूमन चेस्ट या ह्यूमन ब्रेस्ट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन फीमेल का उनका एनाटॉमिकली लार्ज होता है. ठीक है, बट ड्यू टू imbalance in the hormones, if any drug is causing increase in the estradiol level of human male, then that results in the enlargement of human breast, human male breast. So that will look like a female breast. So that's it. That's why it is known as a gynecomastia. Gynec means क्या? Female characters. Mastia means क्या? Importation. Impartment of female characters in the male. That is a gynecomastia. Virilism. There is another term known as a virilism. Virilism means what? So like female में दाढ़ी मूछ नहीं आता. Female will not have any mustache or any beard. So if there is a development of beard or mustache in the female, that is known as a virilism. Okay. Gynecomastia means impart, or if you see female characters in the male, that is gynecomastia, and if you see male characters in the female, that is known as virilism. Then it is largely bound to a nuclear and cause depression of granulocyte and platelet production. It is a drug of choice in the treatment of chronic myeloid leukemia. ये blood cancer में use. We'll see the next. You can see the structure of this drug. Meclorethamine. N-methyl N dichloroethane. N-methyl N dichloroethane. Ethanamine. Okay. N-methyl N dichloroethane amine. That is a meclorethamine. Likewise, that chlorambucil is there. Chlorambucil. Bucil मतलब butyric acid. तो गया butyric acid. C2, it is CH3, CH2, 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 COH. That is butyric acid. Chlorambucil. Chloram क्यों बोलेंगे? यहाँ पे क्लोरीन नहीं. Dic यहाँ पे. Epic name बहुत easy है. You can see. Busulfan. Busulfan में क्या है? Busulfan cyclophosphamide. Cyclophosphamide. You can see the structure of cyclophosphamide. Cyclo मतलब cyclic. फॉस्फा मतलब फॉस्फेट ग्रुप. ये तो साइक्लिक में फॉस्फेट ग्रुप है. अमाइड मतलब क्या? CONH. COONH. मेलफलान. नाउ नेक्स्ट विल सी. इसमें केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, छोड़ दो. नाउ फर्स्ट वी हैव सीन द अल्कलाइटिंग एजेंट. दे विल कॉज अल्कलाइजेशन ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स एंड
different cellular important okay, cellular important biomolecules like enzymes and proteins. Now anti-metabolite मतलब क्या है? मेटाबोलाइट जो लग रहे हैं आपके सेल के फंक्शन के लिए उसके अगेंस्ट में काम करेंगे एंटी-मेटाबोलाइट. So because they have structural similarity with the metabolite, okay, they will block the action of that metabolite. That's why they are called as anti-metabolite. Anti-metabolite क्यों बोलेंगे इसको? Because these drugs they will have structural similarity with the important biomolecular metabolites. जैसे आपका होता है folic acid, इससे होता है आपका पैरामाइनोबिट्रिक एसिड. They will block the action of metabolite. That's why they are known as anti-metabolite. So they look like your normal metabolite, but they are not normal metabolite. So that's why in place of normal metabolite, so these drugs will get incorporated. जैसे होता है because they have structural similarity to the metabolite, they blocks their action, and that's why they are known as anti-metabolite. These drugs they are a structural analog of first folic acid. पहला क्या है folic acid. They may be either structural. These antimetabolites may be either structural analog of your folic acid, and that's why which is essential for synthesis of nucleic acid. तो folic acid जो होता है वो important होता है synthesis के लिए nucleic acid के लिए. So folic acid is very important for synthesis of nucleic acid in the cell. Now some drugs are the folic acid antagonist. For example, methotrexate. Methotrexate जो है that is a folic acid antagonist. Okay. Then nucleotide analog which get incorporated into nucleus instead of original base. न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जो होते हैं जैसे मार्कप्टोप्यूरिन, ठीक है, मार्कप्टोप्यूरिन, उसके बाद में यूरासिल, मार्कप्टोप्यूरिन, यूरासिल, यार न्यूक्लियोसाइड एनालॉग मतलब जो नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड होता है आपका प्यूरिन पिरिमिडिन, उसकी जगह पे ये उसकी जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, उसकी जगह पे ये जाएगा डीएनए और डीएनए खराब कर देगा. न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. These antimetabolites they are of two type. First folic acid antagonist, that is a methotrexate, and second one is a nucleoside analog. Okay, in that you have markaptopurine, thioguanine, then thiofluorouracil, etc. etc. So first we'll see the methotrexate, amino substituted analog of folic acid, and acts as a folic acid antagonist. Okay. Mechanism of action जैसे होता है आपका सल्फा ड्रग्स क्या है? ड्रग्स क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं डायहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस. In the similar way, folic acid is important for the production of coenzyme like tetrahydrofolic acid. Conversion of folic acid to tetrahydrofolic acid is done by folic or folic acid reductase enzyme or folate reductase enzyme. Folic acid is important for production of coenzymes. That means the folic is important for the production of coenzyme tetrahydrofolic acid. तो tetrahydrofolic acid है वो क्या है? coenzyme है. That is very important for nucleic acid synthesis. Now conversion of folic acid into tetrahydrofolic acid is done by one enzyme known as a folate reductase. Now methotrexate competitively binds with the folic acid to this enzyme, inhibit the folate reductase irreversibly. तो ये methotrexate क्या करेगा? जो एंजाइम है आपको folate reductase उसको बाइंड करके इनहिबिट करेगा. Because of that what will happen? Folic acid will not be converted to dihydrofolic acid. तो ये methotrexate जो है it has a structural similarity like folic acid. So it is nothing but the 4 amino substituted analog of folic acid. So instead of folic acid ये methotrexate वहाँ पे जाता है और वो folate reductase को बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देता है, और वो इनहिबिट हो गया तो dihydrofolic acid नहीं बनेगा. Dihydrofolic acid is a very important coenzyme for the synthesis of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल गायब हो जाएगा, मर जाएगा. आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस methotrexate इज अ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट. याद रखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सल्फर ड्रग जैसे ही उसका एक्शन है सल्फोनामाइड का जैसे. methotrexate इज अ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट substituted folic acid analog. Okay, it binds competitively with the folate reductase. उसका काम क्या है कि to convert the folic acid into dihydrofolic acid. That is a very important coenzyme. Okay, dihydrofolic acid, and that dihydrofolic acid is converted into tetrahydrofolic acid. तो tetrahydrofolic acid जो है that is important coenzyme for the synthesis of न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, मतलब जो डीएनए है उसका सिंथेसिस करने के लिए
टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। अभी ये मिथोट्रेक्सेट क्या करता है, फोलिक एसिड के जैसे दिखता है वो, तो डायहाइड्रोफोलिक एसिड फोलिक एसिड को लेने के बजाय किसको लेता है, ये मिथोट्रेक्सेट को, वो क्या करता है फिर इनिबिट करता है उसको। देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ योर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, and if tetrahydrofolic acid is not there, that means there will be no synthesis of DNA. So that's how they are known as anti-metabolite, because they act against the normal metabolites of the body. That's why anti-metabolites. Binding of this methotrexate to the polyreductase irreversibly results in the decreased production of tetrahydrofolic acid. This later binds to this later leads to inhibition of DNA synthesis and cell replication. Now, methotrexate is a more toxic other tissue also, particularly rapidly growing cells. So, methotrexate किसमें टॉक्सिटी है, कैंसर सेल को टॉक्सिटी करता है, लेकिन नॉर्मली अपने जो सेल्स है रैपिडली ग्रोइंग सेल उसको भी टॉक्सिटी करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ methotrexate, पहला क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन। सेल को टॉक्सिटी कैसे करेगा, ये कैसे करता है सेल को टॉक्सिटी, डिक्रीजेस द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, इनिबिशन ऑफ इरिथ्रोपोयोसिस, माइलोपोयोसिस, finally aplasia, ulceration of intestinal mucosa, then hemorrhagic, okay, then hemorrhage, okay, and can transfer, can cross placental barrier and cause teratogenicity. सेल को टॉक्सिटी करेगा, अब किसके, कैंसर के सेल को तो टॉक्सिटी करता ही करता है, अलग विद दैट अपने नॉर्मल सेल को भी टॉक्सिटी करता है। नॉर्मल सेल को कौन से, डिक्रीजेस द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल में क्या आता है, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब आता है ना उसमें। सो डिक्रीज इन द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, सो डिक्रीज द इरिथ्रोपियोसिस, माइलियोपियोसिस मतलब डब्ल्यूबीसी कम कर देगा, फाइनली एप्लासिया मतलब पूरा फंक्शन ही बंद कर देगा बोन मैरो। अल्सरेशन ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो है वहाँ पे रैपिडली ग्रोइंग सेल होते हैं, मैंने बोला है पहले। सो एवरी एंटी कैंसर ड्रग विल हैव दिस एडवर्स इफेक्ट, माइलो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन, देन एलोपेसिया, देन जो किडनी में अल्सरेशन करता है साइक्लोप्स, जीआईटी में बाकी सब अल्सरेशन करेंगे, कॉर्निया को डैमेज करेंगे, ठीक है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू प्लासेंटल बैरियर एंड कैन कॉज टेराटोजेनिसिटी। नाउ सेकंड एक्शन, इम्यूनो सप्रेशन, सो इट acts by preventing the clonal expansion of T and B lymphocytes. तो T and B lymphocytes, T मतलब thymus derived lymphocytes, B मतलब bone marrow derived lymphocytes, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द क्लोनल एक्सपेंशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होने का इनका, सो इट एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट। देन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी है इसको, ओके, इट रिड्यूसेस द lymphocyte proliferation, okay, on the rheumatoid factor, and also decreases the rheumatoid factor production, decreases the production of leukocyte endothelial interaction. In small doses it acts as an anti-inflammatory agent used in the rheumatoid arthritis. इसको साइटोटॉक्सिक एक्शन है, इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी है। इंफ्लेमेशन मींस व्हाट, इंफ्लेमेशन मींस मूवमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स सॉरी, डब्ल्यूबीसी का वहाँ पे मूवमेंट होता है। Absorption, distribution, metabolism, and elimination. It is well absorbed, okay, from the GIT, rapidly disappears from the blood, okay, remains in the tissue for longer than folate. Acid की जगह ये टिश्यू में बहुत देर तक रहता है। It is contraindicated in case of renal impairment. जिसका renal का प्रॉब्लम है किडनी का, तो उसमें ये देना नहीं है। अब adverse reaction क्या है, due to deficiency of folic acid, what will happen? Thrombocytopenia, thrombocytopenia, megaloblastic anemia, leukopenia, oral and intestinal ulceration, nausea, vomiting, diarrhea, alopecia, liver damage. Toxicity can be antagonized by giving folic acid. अगर toxicity हो गए तो folic acid दे दो, कम हो जाएगा toxicity, okay? Folic acid antagonist. Folic acid की वजह से deficiency of folic acid that leads to this megaloblastic anemia, thrombocytopenia, leukopenia, intestinal and oral ulceration, nausea, vomiting, diarrhea, alopecia, liver damage. Now, ketoprofen, which is known as a ketoprofen, is a analgesic antipyretic drug. Ibuprofen होता है उसका डेरिवेटिव होता है कीटोप्रोपेन, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव. So ketoprofen and methotrexate simultaneous administration result in the elevated level of methotrexate. मतलब ये क्या है कि इसमें काइनेटिक इंटरेक्शन होता है, कीटोप्रोपेन क्या करेगा, methotrexate का लेवल बढ़ा देगा, that can cause more toxicity. Should not be administered concurrently. Now, therapeutic uses of
therapeutic use of this methotrexate. So acute lymphocytic leukemia in the children. It is extremely useful in the choriocarcinoma, soft tissue sarcoma, breast cancer. Okay, in acute myeloid leukemia, rheumatoid arthritis, psoriasis, it acts as an immunosuppressant in Crohn's disease and for medical termination of pregnancy. इतने सारे uses है उसके. Acute lymphocytic leukemia in the children, used in the choriocarcinoma, soft tissue sarcoma, also used in the breast cancer, acute myeloid leukemia, rheumatoid arthritis. Okay, then also used in the psoriasis as a immunosuppressant, also used in the Crohn's disease and also used for medical termination of pregnancy. Mechanism क्या है? Dihydrofolate, folic acid आता है. Acid will be converted into folic acid will be converted into dihydrofolic acid. That is folate. Folic acid को folate भी बोलेंगे. Folate is converted to dihydrofolate. Then dihydrofolate is converted to tetrahydrofolate, which is very important factor for the synthesis of your DNA. Methotrexate is nothing but it inhibits the dihydrofolate reductase. DHFR, dihydrofolate reductase enzyme को inhibit करता है and it will prevent the conversion of folate as dihydrofolate into tetrahydrofolate. 6-markaptopurine, 6-markaptopurine, 6-markaptopurine ये क्या है? एंटी मेटाबोलाइट. पहले अल्कलाइटिंग एजेंट देखे, ये मेटाबोलाइट है, एंटी मेटाबोलाइट. मिथोट्रिक्सिड होगा. सेकंड है 6-markaptopurine. मार्केप्टो मतलब क्या? मार्केप्टो मतलब सल्फर ग्रुप. मार्केप्टो जो है वो क्या है? सल्फर ग्रुप. 6 पोजीशन पे सल्फर है. मार्केप्टोप्यूरिन, प्यूरिन का स्ट्रक्चर निकालना है, उसमें 6 पोजीशन में क्या है? सल्फर. ठीक है, दैट इज अ मार्केप्टोप्यूरिन. सो मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका? इट इज अ प्यूरिन एनालॉग. क्या है? प्यूरिन एनालॉग एक्ट्स बाय okay, it is a purine analog acts by interfering with the synthesis and interconversion of purines. Okay, purines markaptopurines. Okay, तो ये purines जो होता है DNA में purines उसका conversion interconversion नहीं होने देना, because in place of normal purine this 6-markaptopurine is incorporated into the DNA and that causes damage to DNA. So markaptopurine is converted into 6-markaptopurine, which is a 6-markaptopurine is the ribonucleotide of the cell and inhibit the de novo synthesis of purine. Purine का biosynthesis है वो ही नहीं होने देता है. So this 6-markaptopurine is converted into 6-markaptopurine in the nucleotide cell, ribonucleotide cell, and inhibit the de novo synthesis of purines and DNA. Okay, pharmacology is similar to methotrexate. It is mainly toxic to the bone marrow and intestinal. ADME क्या है इसका देखो, metabolized by xanthine oxidase inhibitor. Okay, xanthine oxidase. It is required for synthesis of uric acid. Simultaneous use of xanthine oxidase inhibitor like allopurinol result in the increased level of 6-markaptopurine. xanthine oxidase जो है वो मेटाबोलाइज करता है मार्कप्टोप्यूरिन को. अगर allopurinol इज एंटी गाउट ड्रग यूज किया है उसमें साथ में, तो वो उसको इनहिबिट कर देगा और इसका लेवल बढ़ जाएगा. मेटाबोलाइज बाय xanthine oxidase. Okay, and it required for the synthesis of uric acid and simultaneous use of xanthine oxidase inhibitor like allopurinol with the 6-markaptopurine, so that can increase the level of 6-markaptopurine in the blood. So ये मैकेनिज्म क्या है इनका देखो. प्यूरिन एंड ठीक है, प्यूरिन क्या है? प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट इन द सेल. क्या है एक्टिव मेटाबोलाइट? 6-markaptopurine इनकॉर्पोरेटेड इनटू DNA. तो नॉर्मल प्यूरिन की जगह ये 6-markaptopurine जाएगा. उसमें मार्कप्टो मतलब सल्फर मार्कप्टो मतलब सल्फर ग्रुप रहेगा उसमें. तो what will happen due to incorporation of abnormal purine in the DNA? It will break the DNA strand. It also inhibit the DNA synthesis. अपन देखा है abnormal DNA अगर बन गया तो वो ब्रेक किया जाता है. So 6-markaptopurine will incorporate into DNA and will cause break of DNA strand and will cause the inhibition of DNA synthesis. Now adverse drug reaction, bone marrow suppression and gastric epithelial adverse effect. Okay, मतलब वही epithelial सेल का नेक्रोसिस करेगा, अल्सरेशन करेगा. ड्रग is having similar action to methotrexate. hepatic necrosis मतलब लिवर सेल को भी डैमेज कर देगा. hepatic necrosis, hyperuricemia, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा देगा.
हाइपोयूरिकोसूरिया मतलब यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल हो जाएगा. मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फोइडल सेल द एडवर्स रिएक्शन. अब यूजेस क्या है इसके? ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया. ठीक है. देन 6 थायोगोनिन एंड एजाथायोपिरिन. जैसे 6 मार्केप्टोपिरिन है वैसे ही 6 थायोगोनिन होता है, एजाथायोपिरिन होता है. 6 थायोगोनिन is also again a analog of purine. Azathioprine is also analog of purine. They are used as immunosuppressive agent. They are the other purine analog and also possess cytotoxic reaction. Azaserine and dauzomycin. Dauzomycin is known as N-acetylidone. Are glutamine antagonist and interfere with the purine synthesis. Uses याद रखो. बाकी इसके जैसे ड्रग कौन से और 6 थायोगोनिन, then azathioprine, both are used as immunosuppressive agent. Azaserine and dauzomycin, that is N-acetylidone, are glutamine antagonist. Interfere with the purine. से क्या करता है? 6 मार्केप्ट प्यूरिन. नॉर्मल क्या होता है? प्यूरिन होता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, जैसे एडेनिन गोनिन थाइमिन. प्यूरिन से ये डीएनए में पाए जाते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे 6 मार्केप्ट प्यूरिन मतलब उसके ऊपर एक सल्फर ग्रुप डाल दिया 6 पोजीशन पे, so that will act as a false purine. So instead of normal purine, this 6 markup will be incorporated into DNA chain, and that will cause faulty synthesis of DNA that will get damaged, breaking the DNA strand and DNA inhibition of DNA